इलस्ट्रेशन नंबर इज 3। पहले ये बताया है कि सबसे लास्ट लाइन पढ़ने का, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से मेथड से सबको सॉल्व करना है। वी विल बी रीडिंग द लास्ट लाइन फर्स्ट। Calculate the fair value of an equity share of a company, assuming that fair return on the investment in the company doing the similar business is 12%. You have to find out fair value of an equity share. अब ये fair value क्या है? Fair value means combination of intrinsic value, that is net asset value, plus your yield method. जो yield method से हम find out करते हैं divide by 2. So fair value is the average of the net asset value and the yield value. दोनों का एवरेज करके हमें फाइंड आउट करना है आंसर. इट मीन्स ये जो सम है वो आपको 2 मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. वन फ्रॉम द नेट एसेट मेथड ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक मेथड, सेकेंड वन इज यील्ड मेथड. इससे आइडेंटिफाई करो. नाउ जो लास्ट लाइन दिया था कि फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR. So this 12% is NRR. As I told you earlier as well, that 12% जो भी NRR होता है, that will be given in the question. In each question you will be getting NRR. अब देखते हैं information. We have asset side and we have a liability side. We have to take all the assets at the agreed value. टेल मी, यहाँ पर कोई अग्रीड वैल्यू रीवैल्यू करके कुछ दिया है? नहीं. मतलब जो भी असेट्स है वो सारी बैलेंस शीट की जो वैल्यूज है उसमें ही लेंगे. नाउ फिक्स असेट्स एज वेल एज करंट असेट्स विल बी रिकॉर्डेड, बट वी हैव अ 2 थिंग्स गिवन एक्स्ट्रा. मतलब एक्स्ट्रा नहीं दिया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग असेट्स एट एन अग्रीड वैल्यू. So we have a miscellaneous expenditure which won't be recorded. We have a deferred advertisement expenses which won't be recorded. So preliminary expenses जो भी है वो record नहीं होंगे. So miscellaneous expenditure and deferred advertisement expenditure won't be recorded while preparing the net asset value. पहले asset side लिख लेते हैं, then we will discuss about the liability side. So starting with the very first one, land and building. Amount 2,20,000. Next we have plant and machinery. 4,40,000. Next we have furniture for 80,000. Next stock in trade 3,10,000. Debtors 3,50,000. Next we have cash and cash balance. $1,70,000. Just check whether all the assets are recorded or not. All the assets are recorded. Take a total of the asset. 15,70,000. 70. हाँ. 7. Now we will be moving ahead to the liability side. We have to record the external liability. General reserve and profit and loss account
इट इज अ इंटरनल वन. करंट लायबिलिटीज आएगा. करंट लायबिलिटी इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विल कम. यस, इफ यू रिमेंबर हमने थ्योरी में भी किया था, ऑल द प्रोविजंस विल बी रिकॉर्डेड while calculating the sum. याद आया? Provisions will be recorded. So provision for depreciation, provision for taxation, both will be there. Proposed dividend भी आएगा. So all this four is your external liability. Sure. Let's record it. First one is current liability. ₹1 lakh. Provision for depreciation. ₹4,55,000. Provision for taxation. $90,000. And proposed dividend. $85,000. Tell me the total of external liability. 7,30,000. 7,30,000. External liability is also known as outside liability. And एक चीज हमेशा याद रखना, whenever you are making the table, don't forget to give the heading. Heading में क्या होता है? Calculation of profit available to equity shareholder. ठीक है? By which method we are doing? By net asset. So don't forget to give the heading on the table. 8,40,000. This is your value of a net asset. Now हमें ये चेक करना है कि do we have a preference share capital given in the question or not? Yes. Just check. We have a cumulative preference share of ₹10 each. ये authorized का information दिया है, and here we have a information of issued and fully paid up. So obviously we are going to take the information of issued and fully paid up. Authorized मतलब maximum कितना इन लोग share issue कर सकते हैं, उसका information दिया. बट एक्चुअल में जितना हुआ हम उसका इंफॉर्मेशन हमेशा रिकॉर्ड करते हैं. सो वी विल बी टेकिंग द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each. और कितने शेयर्स थे टोटल? 40,000 शेयर्स थे. तो 40,000 इंटू 10 कम्स टू 4 लाख रुपीज. तो पहले जो भी नेट एसेट आया, कैसे आया नेट एसेट? तो ए माइनस बी, जो भी नेट एसेट आया उसमें से हम क्या कर देंगे? पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वी विल पे इट ऑफ. कितने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है? 4 लाख रुपीज का. तो वी विल पे ऑफ फर्स्ट दी 4 लाख रुपीज. लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹4 lakh. Net asset available to equity
इक्विटी शेयर होल्डर कितना आया 4,40,000 ठीक है थोड़ा नीचे से। Now, how you get the value per share? Profit available to equity shareholder divided by number of an equity share. So we got 4,40,000 divided by. Let's check the number of an equity share first. 30,000 equity shares of ₹10 each. So कितना हो गया? Total share capital 3 lakh के, but we have to divide with number of an equity shares. So number of an equity shares are 30,000. कितना आया? 14.67. 14.67 पर शेयर. एक शेयर की वैल्यू मिली. So एक शेयर की वैल्यू है 14.67 रुपीज. Just check the whole of the sum one time.